नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम दो कंपनीज के स्टॉक रिव्यूज करेंगे. द फर्स्ट कंपनी दैट वी एनालाइज इज Nippon AMC. So both these companies have recently come up with their results, and the results of these companies have been really great. What we are trying to understand in this video is whatever results or whatever performance that these companies have given in Q1 FY27, is it sustainable for the next 1 year, right? So if it's sustainable or if the profitability expands for these companies, then obviously the stock prices of these stocks would kind of go up as well, right? So Nippon AMC is the first company, 75,000 crore का market capitalization Nippon AMC का. There are 5 to 6 important metrics or 5 to 6 important questions you need to ask when you are analyzing any AMC stock. The first question is कि total AUM, asset under management, कितना grow हुआ है year on year, quarter on quarter. तो निपॉन का 23% ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर एंड 4% ग्रो हुआ है क्वार्टर एंड क्वार्टर. तो ये अच्छा है या ख़राब है? तो इसको बेंचमार्क करते हैं इंडस्ट्री का. तो इंडस्ट्री के साथ, तो इंडस्ट्री का AUM ग्रोथ कितना ग्रो हुआ ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर. तो इंडस्ट्री ग्रो बाय 15% ईयर ऑन ईयर, 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. कोई पेयर है जिसके साथ हम ये कंपेयर कर सकते हैं? ICICI AMC कर सकते हैं, क्योंकि ICICI का AMC आया, ICICI AMC का रिजल्ट आया, HDFC का भी आया, बट काफ़ी ख़राब रिजल्ट था HDFC AMC का. तो वील काइंड ऑफ compare it with ICICI AMC. So ICICI, if I recollect, year on year growth was around 20%, but quarter on quarter growth was around 1%. So clear cut winner आपका Nippon AMC है. So this is one thing. The second thing which you need to understand is कि ये जो फंड हाउसेस है, AMCs है, ये लोग जब ये फंड्स मैनेज करते हैं, there is a certain commission that they earn for managing these funds, right? But जो regulator है, the regulator is after the commissions these fund houses are earning. So बहुत recently regulator ने कमीशंस कम कर दिए, तो इसको टोटल एक्सपेंस रेशियो या फिर एक्सपेंस रेशियो कहते हैं. एंड द रेगुलेटर इज़ नॉट वेरी हैप्पी दैट दीज पीपल आर अर्निंग सो मच फॉर ईच ऑफ द फंड्स दैट दे आर काइंड ऑफ गेटिंग टू द पब्लिक. तो वो टोटल एक्सपेंस रेशियो जो है, वो रेगुलेटर जो कमीशन है उस पर रेगुलेटर ने एक तरह से एक लॉक डाल दिया, या फिर बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट दे कैन नॉट चार्ज. नाउ व्हाट दीज कंपनीज डू इज़ कि यहाँ पे मार्जिन कम हो रहा है, मार्जिन हिट हो रहा है, बिकॉज द रेगुलेटर इज नॉट that does not want them to earn that much or expand the margin. So what they try to do is they try to sell products which are high margin products. So normally जो active equity funds होते हैं, right, या फिर hybrid funds होते हैं, जैसे 50% equity है, 20% gold है, 20% silver है, 10% bitcoin है, वो बेचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये high margin products है and they want to offset the contraction in their total expense ratio. So that's why you need to look at the AUM mix. So if you look at the AUM mix, करीबन 47% of the AUM mix is of equity funds. ICICI में करीबन 60% of the AUM mix is equity funds. And the last year's growth which you see in Nippon AMC, 22% is the growth which you see in equity funds over here. तो एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट को अच्छे से बेचा जा रहा है, ताकि जो मार्जिन है वो स्टेबल रह पाए इन कंपनीज़ के लिए, राइट. तो निपॉन इज़ एक्चुअली अ मार्केट लीडर इन ETFs. तो अगर आप देखो जो निफ्टी 20 होते हैं या ETFs होते हैं, इसमें निपॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ETFs में इट्स अ मार्केट लीडर. आई थिंक इट हैज़ अराउंड 30% मार्केट शेयर, राइट. सो देयर आर अदर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स इन दी AUM मिक्स, जैसे आर्बिट्राज फंड्स होते हैं, डेट फंड्स होते हैं, पैसिव्स होते हैं, जैसे निफ्टी 50 का एक पैसिव फंड ले लिया, राइट. तो वो सब होते हैं, बट द रियल मनी कम्स फ्रॉम सेलिंग equity, active equity funds. So that is what these companies, that is what these AMCs are doing, right? The other thing which ICICI AMC is doing, which Nippon is not doing, ICICI जो PMS business है उनका, alternates and advisories बोलते हैं, which right now forms 6% of its total AUM mix, उसको एक्सपैंड करने की काफ़ी कोशिश कर रहा है. तो दैट इज़ समथिंग विच निपॉन इज़ नॉट डूइंग. निपॉन अपने ETFs को अच्छे से बेचने की कोशिश कर रहा है, प्लस जो इक्विटी फंड्स है, दैट इज़ व्हाट इट इज़ सेलिंग, पुशिंग वेरी हार्ड वाया इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है. तो निपॉन एक ऐसा फंड है जो बियॉन्ड इंडिया के जो टॉप 30 सिटीज़ है, उनके बियॉन्ड जाके चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है. तो जो टॉप 30 सिटीज़ है उसमें SBI, ICICI, HDFC काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. बियॉन्ड दीज 30 cities, the tier 2, tier 3 cities, that is where Nippon is trying to gain market share. So that has been the strategy, the distribution strategy of Nippon, right? There are other couple of things which we need to kind of understand कि जो सबसे एक reliable AUM mix में एक सबसे रिलायबल प्रोडक्ट होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऑटो पायलट प्रोडक्ट होता है. उसमें कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट की
एक बार का ही कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट लगता है, जैसे लमसम फंड्स में मे बी कस्टमर एक्विजिशन बार बार करना पड़ता है. तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल AUM मिक्स. तो ICICI में दैट नंबर इज 7%, निपॉन में दैट परसेंट इज 9%. एंड जो टोटल इनफ्लोज है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, दे ग्रू बाय अराउंड 22% year on year. So the market has been very turbulent in the last 1.5 year, but the people who are investing in systematic investment plans, they are just doing it in the right way possible, which kind of reflects in the data which Nippon as well as ICICI AMC have given. तो वो एक बहुत स्टेबल प्रोडक्ट है, काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रिटेंटिव प्रोडक्ट है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. और कंपनीज AMCs पुश करते हैं कि वो प्रोडक्ट 7 से 9% हो, 9 से 11% हो, 11 से 15% हो. बट फिलहाल of the total AUM mix for Nippon, that product forms around 9%. So this is another important thing. Nippon का जो ना, मैंने जैसे बताया कि जो AUM growth है 23% है year on year. The management is saying that in the next 1 year they will grow by 22% top line growth. That is what the management has told, which is going to be more than the industry growth, and frankly speaking it's going to be more than what ICICI has projected. तो ICICI का जो ग्रोथ प्रोजेक्ट है वो करीबन 15 to 17% का गाइडेंस दिया है उनके मैनेजमेंट में. एक्सप्लिसिटली नहीं दिया है, बट वी कैन इंटरप्रेट एज इट विल ग्रो फास्टर देन द इंडस्ट्री, बट इट वोंट ग्रो फास्टर than what it delivered in FY26. But Nippon is saying that what we delivered in FY26, which was 23%, we'll come very close to that. We'll deliver 22% kind of a top line growth. So जो guidance दिया है Nippon के management में, the guidance is far better than the guidance which the ICICI AMC management has given. So this is something which you need to take a note of. The asset light business है, operating leverage काफ़ी strong है. The fundamentals of this business, AMC business, are very strong, and right now Nippon looks like a better player than ICICI plus HDFC. Right. So the next company that we discuss is Angel One. तो Angel One एक mid cap company है, करीबन 29,000 crore का market capitalization है, काफ़ी famous company है, brokerage company है. It was one of the leaders of the previous bull run. But जो इनका broking business है, तो क्या होता है, इनका जो revenue mix है 60% is the broking business and 40% is the non-broking business. तो जो भी खेल हो रहा है वो non-broking business में हो रहा है, क्योंकि जो broking business है वो थोड़ा एक तरह से सहम गया है, वो थोड़ा grow नहीं कर रहा है. तो even if you look at the customer base that got increased in this year, 13 lakh new customers they added year on year. But the thing is that the एवरेज डेली टर्नओवर, मतलब जो F&O की एक्टिविटी है जो काफ़ी ज़्यादा होती थी बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस, दैट इज़ नॉट हैपनिंग एज मच, राइट. दूसरा जो चीज़ है द मार्केट शेयर विच दिस कंपनी गेम, तो करीबन 17% का मार्केट शेयर है इस कंपनी का डीमैट अकाउंट्स में, बट ओनली 50 बिप्स इंक्रीज हैपेंड ऑन ईयर बेसिस. तो कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है ब्रोकिंग बिजनेस में. दैट्स वाई द फोकस इज़ ऑन द नॉन ब्रोकिंग बिजनेस. नाउ नॉन ब्रोकिंग में भी क्या है कि देयर आर सर्टन बिजनेस विच आर फेयरली एस्टैब्लिश्ड, जो कैश काउज बन चुके हैं, and there are certain businesses which the company wants to get into. So the company wants to get into, let's say, the wealth management business. किस तरह PMS शुरू किया जाए, किस तरह एक asset management license लेके एक asset management company खोली जाए, right? This is what the company wants to get into. New initiatives है ये. Loan against security, ये grow भी कर रहा है कि आप उनके platform पे हो, you are holding certain stocks, you are holding certain mutual funds, उसके अगेंस्ट दैट हाउ कैन वी लेंड टू यू, राइट. तो इतना बड़ा एक यूज़र बेस है, उसको किस तरह मोनेटाइज किया जाए बाय सेलिंग ऑल दीज, क्रॉस सेलिंग all these products. तो wealth management business normally takes around 2 to 3 years to kind of incubate, तो उसको होने के लिए काफ़ी वक्त लग जाएगा. लोन अगेंस्ट securities, that is again will take some time to happen, but what the company is concentrating right now is the MTF book. तो MTF trading से जो इनको फ़ायदा मिला है, right, the MTF book kind of grew 45% year on year. So that is a massive growth that the MTF, तो interest जो है एक stable income है MTF, margin trade funding is what I'm talking about, MTF. So that is the cash cow right now. Plus ये कंपनी जो है अपना SIP बेच रही है, तो ये भी कंपनी म्यूचुअल फंड, एक जैसे मैंने कहा नॉन ब्रोकिंग बिजनेस में जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है, उसमें जो म्यूचुअल फंड का एक बिजनेस है, दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू सेल. तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स ग्रू बाय अराउंड 12% year on year on the platform of Angel One. So if you look at the growth of this company in FY26, it grew by
25%. Q1 FY27 में भी कुछ 25% का growth दिया है, but the guidance which the management is giving for the next couple of years is 18% top line growth. तो कहीं ना कहीं ये growth जो है Angel One का decelerate होगा, and it is only after a lot of businesses which are in a very incubatory state, when they start firing, that you could see growth which we saw in the past. 25-30% का growth होगा. But the management is very steadfast, very clear कि कुछ वक्त है हम जहाँ पे ना we won't grow as fast as the previous years, but you know, these are certain businesses which we are going to incubate, and maybe in a year or two we go to a 20-25% or a 25% kind of a top line mark. So decelerating growth is what you see in Angel One. So this was a brief about these two companies, or these three companies. Thank you very much for your time. Take care. Bye bye.